Hello and welcome to OASHUB. My name is Sibsang Hajra with you. तो आज टॉपिक रे हम देखबा जीएम क्रॉप. सो जीएम क्रॉप जदि हमें लास्ट टाइम मु कहउथिल के जीएम क्रॉप्स ऊपर गोटे स्मॉल वीडियो बनै देबी. तो दिस वुड बी ए स्मॉल वीडियो ऑन जीएम क्रॉप्स. देखो यूपीएससी 2023 मेंस रे गोटे क्वेश्चन पचारि छि कि इंडिया from a food importer to a food net exporter, how did that possible? Okay. तो ये भाया क्वेश्चन तुमको यूपीएससी मध्य आसी पारे और ताको आमे मध्य करि परिबा केमिति. फॉर एग्जांपल जति मु एठी तुमको देबी जदि आमे देखिबा जदि फॉर एग्जांपल मु कहूची कि जीएम क्रॉप्स कथा नै जिबा ना कॉटन कथा जदि मु कहबी फॉर एग्जांपल आमे कॉटन कथा कहबा किबा ग्रीन रेवोल्यूशन कथा कहिजो येलो रेवोल्यूशन कथा कहिजो पिंक रेवोल्यूशन कथा कहिजो white revolution कथा कहि नै जो. So these revolutions, they have changed the agriculture phase of India. They have changed the production of India. They have changed the overall supply chains related to the food and stuff. सेमती जीएम क्रॉप्स अर्थात जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो जो क्रॉप्स रो जीन को मॉडिफाई करा जाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी ना. ये जो हमरो क्वेश्चन जोटा कि आज हम डिबेट देखिबा गोटे डिबेट between Dr. that is what Suman Sahani and Dr. Deepak Pentla. Deepak Pentla जे कि जदि आमे देखिबा DMH11 मस्टार्ड को सेप देइ छंती जोटा कि तमरो सुप्रीम कोर्ट मना कर देइ छंती. एंड दिस पर्सन दैट इज आमे कहबा जोटा कि डॉक्टर सुमन साही चेयरपर्सन ऑफ द जेन कैंपेन जे कि सुप्रीम कोर्ट पिटिशन देइचंती कि जीएम क्रॉप्स को अलाउ न करा जो और ये चाहउचंती जीएम क्रॉप्स को अलाउ करा जो. तो डिबेट इज दैट मींस हमें देखिबा दी जन के भीतर डिबेट हमें देखिबा. ठीक अछि, ये कोन तांकर पॉइंट को रखुचंती और ये पर्सन तांकर कोन पॉइंट को रखुचंती. सो टू पर्सन्स हमें देखिबा अपोजिट साइड रो अछंती. तो जीएम क्रॉप्स रो मुआ के बेनिफिट्स कहि दिए तुम मन को. जीएम क्रॉप्स रो बेनिफिट्स होची जोड कि इट वुड बी ड्रॉट रेजिस्टेंट, drought resistance, it will be more production, there would be more production, drought resistance, pest resistant, that would be pest resistant as well. It would be heat wave resistant. So these are the benefits. There would be more production भी अधिक होबो. So these are the benefits of GM crops. जदि इंडिया आज कॉटन रे one of the largest producer in the world and exporting, then why? That is possible through the GM crops. So India is now one of the largest producer of the cotton in the world, and that is because of the GM cotton which is allowed. तो डॉक्टर साहानी जदि हमें देखा इज ए डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स हमें देखिबा जे कि चेयरपर्सन अछंती मध्ये सुप्रीम कोर्ट रे पिटिशन डायल करछती का ऊपर जेमति कि DMH11 टाकू अलाउ न करा जाऊ. So you are being the petitioner in the Supreme Court against the GM crops. What promote you to file the petition? तो तांकू से कह गेले कि काहे कि आपण पिटिशन फाइल करछंती. तो तांकर मत देखो. So the GM campaign had organized a national conference reference of the GM technology in India agriculture in 2003 with all possible stakeholders including the industry, civil societies. कहले ये होची कोन ना डिस्टिंग्विश ये कहार चेयरपर्सन अछंती द GM campaign जो थरे कि बहुत सारा लोक अछंती. द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, that is what reverted every single recommendation and saying none of these were needed. So we then had no choice and but to what approach the Supreme Court with the writ petition. That means जतले ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ठू किछि एश्योरेंस पाइले नहीं सेते बेले माने जाई कि सुप्रीम कोर्ट रो रिट पिटिशन फाइल कले. ठीक अछि, फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिले. सेकंड तांको पचरा गला द गवर्नमेंट क्लेम्स इट फाउंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एनिमल्स एंड द प्लांट. Is it correct? तांको कुहा गला तो से तांको स्टार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड डेटा ऑन द बायोसेफ्टी. से कहा था गवर्नमेंट जो बायोसेफ्टी करछंती तार किछि डेटा दउ नांती. एंड द क्वेश्चन सेंट अंडर द
जो RTI अंडर क्वेश्चन जाउछि ताकू गवर्नमेंट आंसर दो नाहंती. फॉर इंस्टेंस द जेन कैंपेन हैड आस्क्ड द biosafety data on the BT Vinjal when it was coming up for the possible release for this, and this was not provided. That's just one instance. Right from the beginning the government refused to engage open discussion. तो से कह कथा देखो जहाँ भी सेफ्टी होची जहाँ भी लैब टेस्ट होची तार आमको किछि कहू नाहंती जो जेन कैंपेन करूछंती जो माने तांको किछि दिया जाऊ नाही ओपन डिस्कशन हो नाही कोठी न कोठी गवर्नमेंट किछि हाइड करूची. थर्ड काहे से चाहू नाहंती एटा अलाउ हो बोली. When GM technology is accepted in USA, why there is not much protest in India? जदि आम देखा दुनिया सब हाएस्ट GM कौटी हो ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना तो ये सब डेवलप कंट्री होची ताले इंडिया रे कहीं GM टेक्नोलॉजी हो परिबो नहीं. The GM technology is one of the beginning. We have many transformative technology in the pipeline. ये कहवा कथा कि बहुत सारा एमते टेक्नोलॉजी अछि. GM technology is not the sole with all substantial potential for the goods as well as harms. कहले समस्तंकर किछि किछि पॉजिटिव किछि किछि नेगेटिव थाए. We must develop stringent regulation. कहले देखो आमे तार समस्तंकर पॉजिटिव प्रोस एंड कॉन्स थाए बट हमको गोटे रेगुलेशन पे गोटे स्ट्रिंजेंट सिस्टम करे दरकार. सुडी रेगुलेशन cause often irresponsible damage. कहले जदि आमे गोटे वीक रेगुलेशन करिबा जो डैमेज हबो डैमेज को तो आमे रिवर्स करि परिबा नहीं. Let me also mention that the here USA, one of the strongest proponent of the GM technology, has also the strongest regulation. कहले USA GM क्रॉप्स को प्रमोट करे किंतु तांकर रेगुलेशन भी सेमती स्ट्रांग रेगुलेशन आमर स्ट्रांग रेगुलेशन नहीं. सेठी वायलेटर माने डैमेज पई खर्च करिवे डैमेज जहां पे तापे पेमेंट करिवे डैमेज को क्लीन अप करिवे जहां लॉस हो ताकू बियर करिवे. कोन इंडिया रे हबो कि दैट वुड नॉट हैपेंस इन इंडिया. Then third, what is the problems with what manipulating the genes of the food crops to get into the desired result? क्या problems कौन जदि आम डिजायर रिजल्ट पानी जाऊे तो प्रॉब्लम तो किसी नहीं थे. ये कौन कहते हैं इंटरफेयरिंग द जेनेटिकल मटेरियल्स कैन यूज आल्सो अननेचुरल सब्सटेंसेस टू बी प्रोड्यूस्ड इन द सेल. देखो जेते बेले आम गोटे जमती गोटे बैक्टेरिया रो जेन को लेकिन गोटे फ्रुट्स रे देइतबा गोटे गोटे प्लांट्स रे देइतबा तो दैट इज नॉट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन the development by using biotechnology. तादर कौन हम किसी unnatural harms ही पारे. Okay, so that is why the scientists who developed this technology themselves asked for the regulation system and that would test that is what unintended effect on the environment. जो मैंने भी डेवलप करछन्ती से माने निजे भी कहउछन्ती ता भी गोटे स्ट्रांग रेगुलेशन होबा दरकार. हमर कोन से इंटेंशन नहीं कि एनवायरनमेंट को हार्ड करिबा वेल ह्यूमन एंड that is what animal health. ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ. We are enough example of the allergy producing substances or the toxics that is production produced by the genetic engineering. से कहवा କଥା जो genetic engineering fruits होची सेथरे एलर्जी हेई पारे सेथरे किछि अदर केमिकल सब्सटेंसेस आसी पारे सेथरे टॉक्सिक्स प्रोडक्शन हेई पारे जोटा कि गोटे हार्मफुल हेई पारे ह्यूमन एंड एनिमल. ओके देन ताको लास्ट क्वेश्चन पचर गेला. हैव यू अचीव्ड the intended goal with the BT cotton? Have you achieved? No. GM crops have been bred for the high yield and that is the higher productivity. से कहा GM crop कौन पे आस्ता है? GM crop इतने पैसे productivity को बढ़े भी, yield को बढ़े भी per hectare. Okay, but that BT pest resistance, okay, and the HT कहले कौन तुम्हारा जो herbicide resistance or the tolerant for the wheat. That BT technology has failed, one can see from the BT cotton experience. The bollworm pest has become resistant and secondary pests have become also aggressive in the dominant. तो से कह कहता कि देखो जो GM crops हमें कॉटन करी छे ना से जो पेस्ट को मैं इंटेंडेड करथिले से वर्तमान रेजिस्टेंट हो जाई छी. ओके वर्तमान तार ना होची कोन दैट bollworm pest रेजिस्टेंट हो गेला एंड secondary pests have become also aggressive and dominant he gala niche mane madhya. And the farmers are either moving away from the cottons or are spraying heavily बहुत ज़्यादा ही स्प्रे करछन्ती.
द एसटी जोटा आम कहे हार्बिसाइड टेक्नोलोजी है ना इन द ह्यूमन एंड द एनिमल हेल्थ डिसऑर्डर करें है ना टू दैट इज व्हाट वेडिसाइड्स आर यूज विथ द एसटी क्रॉप्स दैट इज जमती तुम ग्लिफोसेट as in case of the GM mustard with also declared HT trait, glufosinate and the glufosinate is into the cancer ହେଇପାରେ and mental health को ମଧ୍ୟ disturb କରିପାରେ ठीक ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ଆମକୁ that is clear that neurotoxin produce the cognitive that declines and the toxics to animals and microbes तो ये कोठी ना कोठी हमको ये रहबा तांको डिबेट को हमें देखिले नाउ वी विल कम्स टू जीए तमरो जीए मस्टर्ड क्रॉप्स को निजे इन्वेंट करै चंती तांको ना होचे कोन देखियो डॉक्टर दीपक पेंटेला ये जीएम तमर डीएचएम 11 वैरायटी ऑफ द बीटी मस्टर्ड को करचती है ना जोटा कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करू नहंती Does DM technology has potential to solve the hunger in the country? तांको पचरा गला कौन hunger खत्म करी पारिबो hunger problem arise from the multiple reason lack of purchasing power low food availability बहुत सारा कजे से को ही पारे but India is sufficient in the cereal grains but has major deficient of the legumes and the edible oil से कहे कथा so Dr. Deepak पेंटल कहे कथा कि इंडिया पाखरे सेरियल्स बहुत अच्छी सेरियल अर्थात फूड ग्रेन हमको एडिएबल रे प्रॉब्लम अच्छे लेग्यूम्स रे प्रॉब्लम अच्छी तेणु करिकी काली गोटे हमें टॉपिक देखिथिले कि हमर केमती गोल्ड इंपोर्ट अधिक होची हमर जो ट्रेड डेफिसिट केमती बढ़ी बढ़ी जाउची सो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइबा अछि विथ कन्वेंशनल ब्रीडिंग नॉट पॉसिबल जो increasing the crop productivity with the conventional breed is not possible that is what GM technology could be the value in breeding crops with desirable characteristics to increase the productivity को बढ़ाइबो बोली believe करछन्ते what is the problem with traditional variety of the mustard and how DMH will address it so traditional variety रो कोन problem DMH 11 केमती ताको satisfy करि परिबो तो देखिबा the Indian gene pool mustard is very narrow this is very important very narrow so the productivity is too low as the gene bank is narrow that is why productivity is low for DMH is a hybrid between the Indian and the Eastern European line a pollination control system provided the hybrid system और pollination control को hybrid system कराउची there are three transfer genes that is what Barnes Bastar and Bar so hybrids yield that is the word higher than the DMX 11s are already in the pipeline. तो याको मतलब से कहले 3 gen introduced in the mustard have been rapeseeds used in rapeseeds as what sister crops of the mustard and extensively grown in Canada, USA, Australia. तो that means हम देखिबा 3 gens introduced in the mustards हम कहबा यूज इन जमति कि रेपसीड हे जाउ था तो दैट मींस हम कहबा तो हमरो जो कनाडा अछि यूएसए अछि ऑस्ट्रेलिया अछि एमे यूज करू छंती जीएम क्रॉप्स have say लिखे छी have been reported either on the health or consumers or on the environment so that means हम कहबा इतरे किछि प्रॉब्लम्स नाही नो इल इफेक्ट दैट मीन्स आम जो जीएम क्रॉप्स आम इंडिया मना करा जाउची से ऑस्ट्रेलिया चलची यूएसए चलची कनाडा चलची तांकर किसी प्रॉब्लम नाही द क्रिटिसिज्म says that GM mustard will promote the unchecked used and the dangerous that is glufosinate and harm the environment human health comment करे पिन तांको कहला all pesticide which includes the herbicide insecticide fungicides are harmful in general and recommended does have proven to be safe किंतु से कहले कि जो recommendation आसी सेटा प्रूफ करी एटा सेफ बोली so DMS 11 has not been released for the HT as an what commercial trait commercial पे करा जाए नहीं the use of the herbicide glufosinate is neither needed
nor has been permitted to use in the farmer field. The use of herbicide is proven only in the hybrid seeds and production plots where it is what that is the essential. The farmer will follow the same. So that means एठी से कहूची कि जो हमरो डीएमएच अछि सेथरे ग्लूफोसिनेट को हमर यूज करा जाऊ नाही हार्बिसाइड को अप्रूव करा जाईछि. Okay, so farmers will allow same to package the pesticides for the growing DMH with non-GM variety and false fear are being spread करा जाउछि. That means एक कहया कथा एटा false spread. Then why biosafety doniers? That is the dossier related to a DMH is not public domain रे कहीं की नहीं biosafety. All research of the mustard in the University of the Delhi have been publicly funded organization like the National Dairy Development Board and the Department of Biotechnology Biosafety Studies एमाने ही आकु करिसंती. तेणुकर कि मतलब केवल पब्लिक माने स्पॉन्सर करछंती. द सेंटर्स फॉर द जेनेटिक एंड मैनिपुलेशंस क्रॉप प्लांट दिल्ली यूनिवर्सिटी ओके अप्लाइड फॉर द जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी पई देथिले एंड दैट इज व्हाट इंडिया रेगुलेटरी बॉडी सितंबर 15 से देथिले एनवायरमेंटल रिलीज में. Okay, so that means EMA 300 to 3,251 pages of Donia report. All biosafety studies have submitted to the GEC Genetical Engineering Appraisal Committee को दिया जाइछि. Only after detailed review GEC will approve. GEC gave approval in 2022. The complete dossier was made available to the Minister of Environment, Forest and Climate Change. कहला एटा दिया जाइछि कि कोची दिया हैनी समस्त एटा दिया जाइछि. Critic says that data related to the yield in the donors are manipulated. कहबा कथा आपन को मत कोन. Now the time and again the activists have said the hybrid DMH has no yield advantages. It has narrow that is what competitors variety yield. किंतु से कहबा कथा all those allegations were that is what investigated by the committee of the National Academy and the Agriculture and all are found to be that is what mischievous and false. कहले एमती किछि हबार नहीं. प्रोडक्शन बढ़िबो जो मन कहउछन्ते प्रोडक्शन बढ़िबोनी सेमती किछि नहीं. प्रोडक्शन बढ़िबो बोली ही तो आमी करूचे नल काई करथान्ते. Even promoters of the golden rice, the world fast GM food crops, golden rice claimed it would solve world hunger problem. Yet more peoples are starving than the earlier. कहले जेतरो golden rice असला GM crops सेतरो कहगला vitamin A अछि deficiency अछि. Nobody far claims that the golden rice would solve the global hunger problem. The anti-GM activities have tried to derail the derail that is the release of the golden rice. Hence, it is but potential in taking care of the vitamins A deficiency and could not be realized. It was realized only in Philippines in 2021. तो से कहया कथा देखो जो golden rice अछि even promoter माने कह कहता the world fast GM food crops claims to be would solve the world किंतु ताको तो allow करू नाहंती ना ताको allow करके देखंतु. So nobody has ever claimed that the golden rice would have global hunger that means ठीक अछि solve करियो बोली. तो anti GM activities माने have tried to derail the environmental release of the golden rice. तो एटा करिबा दरकार. तो ये रहिबो कोन हमर डिबेट. So subscribe it, follow it, comment it,